Okay, I'll take some questions. Along with that, the concepts will get revised. So these are some NCERT questions which I have picked up. So the initial introduction part starts with the theory for the acids and bases. So three theories are there. The first one is Arrhenius theory. So Arrhenius theory can also be called as proton theory, in which a proton donor is an acid and a proton acceptor would be base. But Arrhenius theory का एक problem है that this theory is applicable only for aqueous solutions. So it says that whenever a substance is dissolved in water, if it donates H plus, then it will be an acid, and if it donates OH minus, it will be a base. So Arrhenius theory इतना ज़्यादा use नहीं करते हैं. बाद में आता है Lorry-Bronsted theory. Now this is actually the proton theory, wherein the proton donor is an acid and the proton acceptor is a base. Now इस theory में conjugate acid base का concept important है. ठीक है? So let's say I have ammonia reacted with HCl. Now this is a simple neutralization reaction to give ammonium chloride, which is NH4 plus and Cl minus. Now from ammonia to ammonium, it has accepted the proton, and from HCl to Cl minus, it has donated a proton. So HCl is of course an acid and ammonia is a base. Now from this acid, after donating the proton, the anion which is formed is called its conjugate base. So this conjugate base is obtained by removing a proton, and ammonia से proton accept करने पर ammonium ion, the cation which is formed, is the corresponding conjugate acid. तो conjugate acid अगर किसी species का find करना है तो trick हो जाता है conjugate acid is formed by accepting a proton and a conjugate base is formed by donating a proton, that is CBD. ठीक है, तो अब प्रॉब्लम 6.12 अगर देखेंगे तो conjugate bases for the following Bronsted acids are being asked. So HF, H2SO4 and the bicarbonate. So in सब में से when you remove the proton, what you get is the corresponding conjugate base. ठीक है, तो अब F negative sulfuric acid से HSO4 minus and the carbonate anion. In fact, if you talk about the bicarbonate, it will have the tendency to donate a proton, forming a conjugate base, as well as accept a proton, forming a conjugate acid. तो अगर इसका conjugate base पूछा है तो it's of course the carbonate ion, and the conjugate acid of this will be the carbonic acid. कोई भी polybasic acids हो जिसमें there are two H plus ions, उसके जो intermediates होते हैं, they will always be acting as the amphoteric species. Yeah, amphoteric की जगह actually what we use is amphiprotic. So amphiprotic मतलब it can accept as well as donate a proton. So bicarbonate is amphiprotic. अब third theory जो है that is the Lewis theory, which is simply called as lone pair theory. And according to Lewis, a lone pair donor is a base and a lone pair acceptor is an acid, जो कि हम ऑर्गेनिक में भी यूज करते हैं. ठीक है, सो 6.13 is fine. Conjugate acids आपको find करना है. So acids would be obtained by accepting a proton. So NH2 minus का ammonia, NH3 का ammonium and formate का formic acid. ठीक है, अब Lewis theory के related questions. You have to classify the following species into the Lewis acid and Lewis base. A simple way to remember Lewis acids in organic chemistry are electrophiles,
And electrophiles are those which are electron deficient. So basically all the cations and neutral molecules with incomplete octet like BF3, AlCl3, BCl3, SnCl2, they will be the example of Lewis acid. All the cations and the incomplete octet molecules. Similarly, Lewis bases की अगर बात करें, then all the anions and the molecules which have a lone pair will act as a Lewis base. So here, if I talk about the hydroxide, it is a Lewis base, base, chloride base, base, H plus a proton so, will be Lewis acid, and BCl3, so this acid. is an incomplete octet molecule. So this will be an example of electrophile or the Lewis acid or the lone pair acceptor, because they will have the tendency to accept the lone pair and form corresponding stable compound. ठीक है, सो इनिशियल पार्ट ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस का थियोरीज दिया है, साथ में एसिड स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, which we have also discussed in organic chemistry. उसी लाइंस पे स्ट्रेंथ्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं. The next topic is about the pH and pOH. So I hope basic concepts तो सबको आते हैं. Calculations में कुछ problems हैं, तो I'll just discuss the calculations over here. First of all, we all know that the pH of any acid could be found by negative logarithm to the base 10, the concentration of the H plus. Now here, the question is already giving you the concentration of hydrogen ion in a soft drink as 3.8 into 10 power minus 3. And what is its pH is the question. So if you take the negative logarithm of this value, which is 3.8 into 10 raised to minus 3. तो मैंने बताया था आपको नेगेटिव लॉग किसी भी नंबर का अगर लेना है with a 10 power negative, then the shortcut rule is The power minus the number which is multiplied is 3 power minus log minus 3.8. log of the number. Perfect. सो नेगेटिव लॉग ऑफ ऐसे टाइप का नंबर रहेगा तो उसका जो भी पावर है वो बाहर आ जाएगा. तो द पावर ओवर हियर इज 3 माइनस लॉग ऑफ 3.8. नाउ लॉग की वैल्यूज में मैंने आपको बताया कि तीन ही लॉग वैल्यूज यू हैव टू रिमेंबर. लॉग 2 टू द बेस 10 is 0.3. log 3 is 0.48. log 5 is 0.7. Now with this three log values, almost all the other logs could be easily found. ठीक है, जैसे if you know log 2, then log 2 के powers are all known. So log 2 का square, which is log 4, will become 2 log 3, which is 0.6. Log 2 cube, which is log 8, will become 0.9. And so on. आप 2 के सारे powers का log find कर सकते हो, meaning 2, 4, 8, 16, and so on. If you know 3, then 9, 27, and so on. 5 है तो 5 square, 5 cube, everything can be calculated. ठीक है, अब in between अगर कोई value आता है, let's say you are finding the log of 3.8. तो through this log 4 का value भी अपने को पता है 0.6. So answer is going to be just less than 0.6. So near about you can just take 0.5758 and subtracting from 3 you'll get the answer as 2.42. So this is the pH. Of course options may you will have the 2 point values and that will be the direct answer because 3 minus जो भी करोगे 2 point में आंसर आएगा and that's how you can find it. अब रिवर्स में if you are asked to find the H plus and pH is given, then the H plus concentration is found by taking antilog of negative pH. तो of course अगर ये 2.42 वैल्यू लूं
So I should get the answer as 3.8 into 10 raised to minus 3. ठीक है, तो इसको कैसे solve करना है? Antilog of negative of 2.42. Now, antilog of a negative number can't be found, but we have to convert this into the Positive value by taking a bar on top. हाँ. So bar value का एक trick था. 2 plus 1, so 3, and then 100 minus 42. So you get 58. So 58. Yes. So basically यहाँ पर whatever number before the decimal is there, add 1 to it and convert that to bar. So minus 2 will be 3 bar, minus 10 होता तो 11 bar, minus 7 होता तो 8 bar. उसके बाद जितने भी number of digits है after decimal, तो accordingly you have to subtract from 10, 100, 1000 और so on. जैसे 42 है तो 100 में से subtract करके we get 58. Now the bar 3 will be directly raised to the power of 10, so 10 power minus 3 हो जाएगा, and antilog of 0.58. अब antilog कैसे ढूंढना है? So I always use a statement. If you know logs, you know antilogs. Because log 2 to the base 10 is 0.3, so antilog of 0.3 is 2. Antilog of 0.48 would be 3. Antilog of 0.6 would be 4. Antilog of 0.7 will be 5 and so on. So I want to find antilog of 0.58, which is of course very close to antilog 0.6. So answer would be 4 से थोड़ा कम. और क्या भाई? Hey Jain. So answer is going to be 3 point something into 10 raised to minus 3 molar. So in the option you find first 10 का power. अगर एक ही option में 10 का power minus 3 है, that will be answer. And अगर 10 power minus 3 में दो options है, तो 3 point something will be your final answer. So that way you can find two types of questions. You can solve two types of question. One is to find pH when H plus is given, and vice versa, H plus when the pH is given. Are you all clear with the calculation? इसमें कोई doubt? So how did you know it's 10 is to minus? Sorry? So how do we know 10 is to minus क्या power है? Whatever is the bar value that is raised to the power of 10. मतलब 3 बार है तो 10 raised to minus 3. 8 बार होगा 10 power minus 8 होगा. Okay. ठीक है, और antilog of 0.58. So antilog of 0.58 is very close to antilog 0.6, जिसकी वैल्यू है 4. तो आंसर विल बी 4 से थोड़ा कम. तो 3 point something something मतलब वेरी क्लोज टू 4, तो 3.8, 3.7 ऐसी कुछ वैल्यू होगी. ठीक है, अब एमसीक्यू सॉल्व करना है तो मैंने क्या बोला, पहले तो चार ऑप्शन में से 10 पावर देख लो. अगर एक ही ऑप्शन में 10 पावर माइनस 3 है, 100% दैट इज द आंसर. दो ऑप्शन में 10 पावर माइनस 3 है तो 3 पॉइंट वाले में जाओ. मान लो 3 पॉइंट वाले में भी एक 3.2 है और एक 3.8 है, तो यू नो दैट द आंसर इज क्लोज टू 4. So obviously you go with 3.8 and not 3.2. So that's how you can just rule out the options and get to the correct answer. समझा? अरे बोलो. So, if the हाँ. number is minus 2.87, then we round off, or because 100 minus 87 will come 13. So 0.13 का anti-log, how to find them? ओके, मुझे बताओ log 1 क्या होता है? 0. हाँ, तो एंटी लॉग ऑफ 0 क्या होगा? 1. 1. अब आपने बोला 0.13, मतलब 0 और 0.3 के बीच में है, तो आंसर होगा 1 और 2 के बीच में. Okay. Okay, sir. Got it. आंसर 1 और 2 के बीच में है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, वो भी 1.5 से कम होगा क्योंकि 0.15 से कम की वैल्यू है आपकी. राइट, सो 1.4 के आसपास समथिंग वैल्यू इनटू 10 पावर, तो आपको -3 मिल जाएगा. So can you explain this again? Okay, let me take one random example. You are being given
H plus का concentration as 2.98 2.48 ले लेते हैं into 10⁻⁻5 molar. Now इसका pH through the shortcut is power minus log of the number. So power is 5 minus log of 2.48 would be somewhere between 3 and 0.48 and ये approx उसका median value होगा. So इसका average अगर लेंगे 0.3 and 0.48 then you get 0.39. So this will give you 4.61. So this is how you find pH. So H plus pH is clear, everyone. Para, Charmi. Yes, sir. I was asking about the 13th one thing that she asked. अच्छा, Yeah. ठीक है, वो भी ले लेता हूँ. Versus, let's say you are asked the H plus concentration. तो antilog of negative pH लेंगे और negative pH मतलब यहाँ पर you have to take minus of 0.46, 4.61. So this will be converted into bar 5.39. So this will be 10⁻⁻5 and 0.39 जो है that will be somewhere between 2 and 3. So 2 point something something into 10⁻⁻5 molar will be the answer. Okay, sir. ठीक है. अब जो उसने पूछा था that was about anti-log of -2.87. ठीक है. This is let's say H plus concentration find करना है. तो इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बार 3.13 हो जाएगा. अब बार 3 मतलब 10⁻⁻3. एंटीलॉग ऑफ 0.13 इज समवेयर बिटवीन 1 and 2 और उसमें भी 1.5 से थोड़ा कम. तो 1 point something something into 10⁻⁻3. एक्यूरेट में जाना है तो 1.5 से थोड़ा क्लोज होगा. 1.4 के आसपास डेफिनेटली विल बी द आंसर. Okay, sir. Thank you. सर फाइन अगर विद द कैलकुलेशन. हाँ बोलो. In the previous example, it was 10 raised to -5. So if instead of 10 raised to -5, it was 10 raised to +5, then we would remove the power outside. तो So नेगेटिव then 5 आएगा. to -5 minus log 10. यस. जनरली H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा हाई होगा ही नहीं. So 10 power plus 5 is like not a valid value only. Okay. Henil, you were asking something? यस सर इफ इट वाज -4.061 तो फिर सब्ट्रैक्शन के बाद 1000 में से 061 को माइनस करते ना. Yes. ओके सर. तो 3 डिजिट 1000 में से माइनस करना है, 2 डिजिट 100 में से करना है, 1 डिजिट 10 में से करना है. क्या? डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है उसको देखना है ना सर. 0 हाँ बस बस यस यस. क्या बोल रहा हूँ? 2 डिजिट है तो 100 में से, 3 डिजिट है 1000 में से. ओके सर. क्या कैलकुलेशन में कोई डाउट? हाँ बोलो. Calculation, sir, water concentration is also mentioned. What are the conditions for when we take it and when we don't take uska H plus? H plus. So like अच्छा, H, ये वाला water. क्वेश्चन. हाँ. हाँ. See, you're supposed to calculate pH of 10 power -8 molar solution of HCl. Now, HCl is a strong acid. अब अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेशन करोगे तो the pH is negative log of H plus. So in this case, you will directly get the answer of pH equal to 8. Is there any problem with this? So the pH cannot be so high. No, it's an acid. So high matlab you know the range, right? pH Yeah, 7 is neutral, 7 से less acidic होता है, 7 से greater base हो basic. जाता है. हाँ. pH equal to 8 is for a base. So this is not the correct answer. So what is the problem with this particular data? इस data में जो 10⁻⁻8 molar HCl है, it says that H plus concentration is 10⁻⁻8, which is even less than the H plus concentration which is present in water.
दैट्स 10 raised to Yes. -7. मतलब ऐसे केस में जो H plus concentration है, that is to be taken as net concentration in the solution, which is H plus coming from the HCl plus the H plus coming from Water. 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 So if the H plus concentration is less than or equal to 10 power minus 7 molar, then always consider H plus of water. Is the condition clear? अंशी यही पूछ रहे थे? Yes, sir, got it. Always consider the H plus of water. मतलब 10 raised to -7 is to be added. So if you know this reason, you'll never fumble with this type of questions. So from HCl we're getting 10 power -8 and water से 10 raised to -7 जो कि बड़ा concentration है. तो अब solve करने के लिए 10 raised to -7 common, 10 raised to -1 plus 1 will become 1.1 into 10 raised to -7 molar. So now the pH of this solution will be 7 minus log of 1.1. Log 1.1 is 0.02. अगर नहीं भी पता है तो इतना तो पता चल जाएगा कि इसका आंसर will be less than 7 and of course close to 7, which is 6.98. And this is a valid value because it's an acid, जिसका pH 7 से कम होना ही चाहिए. And the same rule is applicable for the base. अगर OH minus का concentration less than or equal to 10 raised to -7 है, तो always consider the OH minus coming from the water. Yes? Yes, sir. चलो इसमें कोई doubt? Okay. Now we come to the ionization constant, that is the concept of Ka and Kb. Ionization or dissociation constant is one and the same. The ionization constant of an acid is Ka and for the base is Kb. अब इसका जितना भी रिलेशंस है इट्स एग्जैक्टली सेम, मतलब K का डेरिवेशन एंड Kb का डेरिवेशन इज एंटायरली सेम. सो डेरिवेशन का फंडा क्या है? जैसे यहाँ पर दे आर टॉकिंग अबाउट HF एसिड. HF is a weak acid and in water it will dissociate partially to give H plus and F minus. But H plus with the water exists as hydronium ion and the conjugate base is F negative. Okay. Now, if I consider the concentration of HF to be C, water is always present in large excess, so we are not going to consider the concentration of water. And initial mein 0, 0. This is what is the ice table I am talking about. Okay. If you start with the concentration C at the start, time t equal to 0, then equilibrium establish करने के बाद this concentration of H plus and the F minus will become alpha C. This is at equilibrium. And the concentration of the HF would be C minus C alpha, or we can write C into 1 minus alpha. Ab, the ionization constant of an acid is given by concentration of ions upon the concentration of the undissociated acid, which will be equal to alpha C into alpha C upon C into 1 minus alpha. C gets cancelled. What we have is alpha square C upon 1 minus alpha. अब यहाँ पर अल्फा जो है जनरली फॉर द वीक एसिड्स इज वेरी वेरी स्मॉल. सो यहाँ पर एक रूल है दैट इफ अल्फा इज लेस देन 5%, then you consider the alpha to be small, 1 minus alpha approximately 1. ठीक है. So in those cases you can ignore 1 minus alpha वाला term, but alpha अगर 5% से greater रहेगा, greater than or equal to, then it will be considered. In that case you will get a quadratic equation and the alpha could be found by the roots of the quadratic equation. अरे समझ में आता है?
Yes, sir. So in this case, if we approximate, then the Ka value becomes alpha square C. And through this, you get a simple relation of alpha and the concentration, which is given by alpha equal to root of Ka by C. अब Ka के रिलेशन में भी कंडीशन है, अगर Ka का वैल्यू is greater than 10 raised to minus 5, if the Ka value is greater than 10 raised to minus 5, then the alpha can't be neglected. मतलब you have to keep the alpha in the equation. लेकिन Ka की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 पावर माइनस 5 हुआ, यानी 10 पावर माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, देन अल्फा को इग्नोर करके ये वाला एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो. तो द कंडीशन लाइज इन बोथ, दैट इज Ka का एंड अल्फा का. तो ये दो चीज ध्यान में रखो. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, the ionization constant for the HF is given to be 3.2 into 10 raised to minus 4. Now tell me whether the alpha could be ignored or not. This is a Ka which is given in the question, right? No, sir. So you can't ignore because it is greater than 10 raised to minus 5. तो अल्फा को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो. आई बात समझ में? So now to calculate the dissociation constant, you have to use this particular expression without ignoring or neglecting the alpha wala term. So in this case, your solution would be Ka is equal to alpha square C upon 1 minus alpha. This is the actual expression. Approximated expression is this one. अब कौन सा use करना है, that you can understand. So therefore, in this case, it will be 3.2 into 10 raised to minus 4 equals to alpha ढूंढना है, so alpha square into 2 into 10 raised to minus 2 is the concentration given upon 1 minus alpha. So let's take this 2 into 10 raised to minus 2 wala term on the left hand side in the denominator, and we have alpha square upon 1 minus alpha. So this becomes 1.6 into 10 power minus 4 है, तो minus 2 ऊपर चला जाएगा and alpha square upon 1 minus alpha. अब multiply, so you have 1.6 into 10 raised to minus 2 minus 1.6 into 10 raised to minus 2 and equals to alpha square. So finally आप जब इसको on the right लेकर आओगे तो you will get alpha square plus 1.6 into 10 raised to minus 2 alpha minus 1.6 into 10 raised to minus 2, and that will be equal to 0. So what you get is a quadratic equation now, and this is of the type ax squared plus bx plus c equals to 0. So x could be found by the roots of the quadratic equation, which is minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. अब यहाँ पर दो वैल्यूज आएगा, तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो अल्फा के लिए पॉसिबल नहीं है, so that can be ignored, and the other positive root would be your answer to the alpha value. And once you find out the alpha value, तो the H3O plus concentration is alpha into C, यानी जो भी अल्फा आंसर है into 0.02 करोगे, F माइनस का भी सेम आंसर आएगा. बाद में यही पूछा है H3O plus F माइनस और HF. HF का concentration क्या होगा? C into 1 minus alpha. तो ये तीनों वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो once you have the alpha with you. So in this sum, it's not given that alpha is less than 5%. So that's why you've taken 1 minus alpha in the denominator. I have given you two conditions. So alpha कब इग्नोर करना है, कब नहीं करना है, तो यहाँ से देखो समझ में आएगा. तो क्या Yes. लिखा है? So but you said that you have to take 1 minus alpha is equal to 1 when alpha is less than 5%. But Here that तो alpha is to be found ना, alpha इग्नोर कैसे करोगे?
Oh, हाँ, okay, makes sense. तो यहाँ पे के बेसिस पे यू हैव टू डिसाइड। अगर के का वैल्यू बहुत छोटा है तो उस केस में भी अल्फा छोटा ही आएगा। इन दैट सिनेरियो यू कैन इग्नोर अल्फा Okay. डिस्पाइट ऑफ क्वेश्चन इज वेदर टू फाइंड अल्फा और नॉट। तो अल्फा को इग्नोर करना है नहीं करना है वो अल्फा के बेसिस पे भी डिसाइड करो और के बेसिस पे भी डिसाइड करो। Okay. So हाँ, whenever we get these equations, do we always have to find it, or we can use this formula direct by the conditions? विच कंडीशन? So if k is more than 10 raised to minus 5, we can use the formula, but do we have to find the whole ice table again? ना ना ना, दिस इज जस्ट We फॉर can द do it रेफरेंस। directly, यस right? यस, ये डायरेक्टली आप यहाँ से स्टार्ट करो। ये तो मैंने So थोड़ा because थियोरी like आपको बताया। like if they give an equation and you have to find the products and then uska concentration and everything. So do we do the ice table again or direct? डायरेक्ट कर सकते हैं Okay, okay. क्योंकि जितने भी फॉर्मूलाज है दे आर फाउंड फ्रॉम द आइस टेबल ओनली। They are इफ derived, यू लो, yeah. या तो Okay, आपको अगर पता है तो डायरेक्टली करो, नहीं पता है तो आइस टेबल से करो। मतलब दोनों वेज में यू कैन फाइंड आउट। okay, okay. तो आपके पास एक फॉर्मूला भी है H प्लस इक्वल टू एन अल्फा सी, है ना? Yes. ये फॉर्मूला यहीं से तो आया। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज अल्फा सी। फॉर अ मोनोबेसिक एसिड इट्स 1 H प्लस, सो 1 अल्फा सी। अगर यही डाई बेसिक H2CO3 होता, 2 अल्फा सी Okay, होता, got it. H3PO4 होता तो 3 अल्फा सी। सो जनरल फॉर्मूला क्या आता है? इन अल्फा सी, दिस अल्फा इज गिवन बाय रूट ऑफ Ka बाय C इंटू सी। फाइनली यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला ये भी आपने देखा होगा, रूट ऑफ Ka Yes. इंटू सी। So whether you use the formula directly or derive it, you will get the same answer. Okay, sir. Thank you. बोलो। अगर यही क्वेश्चन में k का वैल्यू स्मॉलर देन 10 is to minus 5 होता तब अल्फा कैसे फाइंड कर? यही फॉर्मूला डायरेक्ट, अल्फा विल बी इक्वल टू रूट ऑफ Ka बाई सी। ये रहा। अच्छा, कंडीशन बहुत सिंपल है, 1 माइनस अल्फा लेना है या नहीं लेना है। तो उसके लिए मैंने आपको ये दो क्लाउड ट्रिक्स दे दी है। गेटिंग इट? ओके, थैंक अब देखो एक और क्वेश्चन। द pH of 0.1 molar base monobasic acid is 4.5. Calculate the concentration of H plus, A minus and HA at equilibrium. Also, determine the value of Ka and pK of the monobasic acid. It's a very good question. You are given pH and you are supposed to find H plus, A minus and HA. What would be the flow? बोलो। So we can find concentration of OH minus and then concentration of H plus into concentration of OH minus would be 10 raised to minus OH 30. माइनस क्यों लेना है आपको? इट्स एन एसिड ना, एसिड में आप OH माइनस क्यों लोगे? Hmm. सिंपल है ना, pH दिया हुआ है। डू यू नो हाउ टू फाइंड H प्लस? So we find negative log value से anti-log value से H plus. करेक्ट। तो पहला स्टेप है H प्लस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस pH। हाँ कि नहीं? Yes. So antilog of minus pH मतलब minus of 4.5, which will be equal to antilog of bar 5.5, and bar 5 will be converted to 10 power minus 5, and antilog of 0.5 is close to 3. 3 से ज्यादा या 3 से कम? 3 से ज्यादा. हाँ, तो 3 से थोड़ा ज्यादा अज्यूम कर लो, 3.2। ठीक है, तो ये H प्लस आ गया। Now, in the dissociation of HA, you have H plus and A minus.
with the concentration C, 0, 0. This will be alpha C, and C into 1 minus alpha. Now you see, whatever is the H plus concentration at equilibrium, it's the same as A minus concentration. मतलब जो हमने H plus के लिए फाइंड किया है, that is valid for the A minus concentration also. समझा? Yes. So now you are supposed to find in the next part K. So K का So- concentration. हाँ, Concentration of the So for pK, can we use the direct formula which is given now? pH is equal to pK minus log C upon 2. हाँ. And then K to anti-log See, वो भी डिराइव ही किया है ना. H plus is equal to N alpha C. इसको मैंने लिखा था N root of Ka into C. फॉर्मूलाज अगर याद नहीं रहते हैं तो मत याद करो, आप उसको डिराइव कर सकते हो. K into C raised to half. अब the pH is equal to negative log of H plus concentration. So that will be, अब मान लो ये N1 है for a monobasic acid. So negative log of half K into C का half. So ये minus half हो जाएगा log of Ka and minus half log of C. अब negative log Ka को ही तो PK. K. So half common Pk minus log C. This is how we get. तो अगर फॉर्मूला आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो डिराइव कर लो. मैंने आपको ये फॉर्मूलेस वगैरह याद रखने दिए भी नहीं है, कॉन्सेप्ट याद करो खाली. ठीक है. अब इसमें HA का कॉन्सेंट्रेशन भी आपको पूछा था, विच इज गिवन बाय कॉन्सेंट्रेशन इनटू 1 माइनस अल्फा. अब in this case the HA concentration has the value of concentration given 0.1 and 1 minus alpha. I don't have the alpha value. How can I get that? Alpha is equal to under root K by C. बट आपको Ka भी तो नहीं पता, Ka तो ढूंढना है. So we can H find plus Ka का with H plus the concentration. We have Sorry, come plus again. का आ value जाओ. we have no. हाँ, so under root Ka Hey, into H C plus is is H alpha plus C. concentration. K तो फाइंड करना है, K किधर दिया है. H plus is equal to alpha C. परफेक्ट. H plus अल्फा C के बराबर है. So we now know H plus का concentration अल्फा C. अब C 0.1 है तो अल्फा from here will be equal to 3.2 into 10 raised to minus 4 हो जाएगा. और अब ये वैल्यू देखोगे तो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू. डू यू ऑल अग्री? Yeah. सो अल्फा अगर बहुत छोटा है तो 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकते One. हैं. Yes. इसका मतलब H प्लस का सॉरी HA का कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 into 1. That is just 0.1 molar. It means that almost the HA remains undissociated because of a very low alpha. Understood? Yes. And then अब अगर Ka find करना है तो we can find through the equation, that is, what will be the formula to take? Alpha is equal to Alpha under square root K C. by so alpha square C. Direct alpha square C, because alpha बहुत छोटा है. तो 3.2 into 10 raised to minus 4 का square into 0.1 will be your answer for K. समझा क्या? Yes. 32 to 64, 32 to 396 and 102, 10.24. So this is 10.24 into 10 power minus 9 हो जाएगा, which is 1.024 into 10 raised to minus 8.
अब पीके भी पूछा है, तो थ्रू दिस पीके इज इक्वल टू पावर minus 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 log log of k. 1.024. Now this is approximately 1 and log 1 is, 0. 0. so the answer is 8. We found A minus H plus H A K A P K, 5 वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया. Is this question clear? सर Yes or no? इधर हाँ, सर के को यूज करके अगर के पता करना है तो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन से भी ला सकते हैं ना, जैसे मतलब H एच प्लस. हाँ हाँ, H प्लस इंटू ए माइनस अपॉन एच ए, एच ये है, तो हाँ वैल्यू है. वैसे भी कर सकते हैं. हाँ हाँ. यही आएगा ना आपको, क्योंकि H प्लस इंटू ए माइनस अपॉन एच ए करेगा तो यही तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा. जब हाँ. 1 माइनस ठीक. अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 करेगा, यू आर लेफ्ट विद अल्फा स्क्वायर सी ओनली. So whether you do by the h plus a minus upon ha or the formula, आंसर आपका चेंज नहीं होगा, बिकॉज वही कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला आया है. ओके सर. ठीक है. नेक्स्ट, कैलकुलेट द pH of the solution in which 0.02 molar NH4Cl and zero point 0.1 molar NH3 are present and the pKb of ammonia is given. pKb of ammonia is given. How do we start this? So you can use that direct formula na, of pKb plus salt upon base. Here, a solution is there in which ammonia and ammonium chloride directly are present. And 0.02 molar salt है और 0.1 molar ammonia है. pKb is equal to minus log Kb, and then after finding Kb, we can find the constant after writing Kb is equal to reactants upon products like ions upon no, sorry, ions upon the things that are getting dissociated, and then we can get the pH of the solution. Then we can get H plus concentration. Yes. Now इसमें एक observation, ammonium chloride will dissociate completely into NH4 plus and Cl minus. And ammonia, when dissolved in water, forms the ammonium ion. Meaning, when you have ammonia dissolved in water, it will form ammonium hydroxide, which is as H4 plus and OH minus. Common Now, ion effect. common ion effect ना, कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है इधर. कॉमन आयन आगे भी बताता हूं मैं. सी अमोनिया का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.1. 0.1. वाटर नहीं कंसिडर करते. अमोनियम एट द स्टार्ट, डू वी हैव एनी अमोनियम एट द स्टार्ट? No. अरे डू वी हैव एनी अमोनियम एट द स्टार्ट? Solution No. is there where you have No. 0.2 molar ammonium chloride and 0.1 molar ammonia. तो इस solution के स्टार्ट में अमोनियम है या नहीं? है ना? This is not at equilibrium. This is the initial ammonium which is present. तो हर बार प्रोडक्ट साइड में 0 0 नहीं होता है. There might be some of the product which is at the start. So टाइम t इक्वल टू 0 पे 0.2 अमोनियम प्रेजेंट है, वो लेना ही पड़ेगा. और यहाँ पे 0 क्योंकि हाइड्रोक्साइड नहीं दिया है. अब इक्विलिब्रियम पे जब आएगा
तो यहाँ पर अल्फा का डिसोसिएशन होता है, तो लेट्स से दिस विल बिकम 0.2 प्लस अल्फा, दिस विल बिकम अल्फा एंड दिस विल बिकम 0.1 माइनस अल्फा। तो आइस टेबल में हम सिर्फ ये 0.2 को एडिशनली इंक्लूड करना पड़ेगा, बाकी का पूरा फ्लो रिमेन्स द सेम। समझा ये आइस टेबल? तो नेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा, पीकेबी से केबी को निकालना है। सो केबी विल बी इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ माइनस पीकेबी which is equal to antilog of negative 4.75 which is equal to antilog of bar 5.25। बार 5 जो है वो 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा एंड 0.25 विल बी अ वैल्यू क्लोज टू 2 से थोड़ा कम, ठीक है। और 1.7 could be the approximately आंसर। तो ये केबी हो गया। अब केबी का एक्सप्रेशन वुड बी concentration of ammonium into the hydroxide upon ammonia। तीनों का वैल्यू वी हैव फ्रॉम द आइस टेबल एंड इवन केबी का वैल्यू वी हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 1.7 into 10 raised to minus 5 equals to 0.2 plus alpha into alpha upon 0.1 minus alpha। केबी का वैल्यू अगर चेक करोगे तो इट इज 10 raised to minus 5। So can we ignore No, this alpha वाला टर्म? कंडीशन क्या दिया था मैंने? less than or equal to 10 raised to minus 5, you can ignore. No, it was greater than 10 raised to minus 5, that's it। ये देख, अगर के 10 पावर माइनस 5 से बड़ा है, यानी अगर 10 का पावर -4 -3 है तो ही आप अल्फा को कंसिडर करोगे, अदरवाइज यू हैव टू जस्ट इग्नोर। मीनिंग इन दिस केस 0.1 minus alpha which would be a very small value can be ignored and we are left with 0.2 plus alpha into alpha। even ऊपर वाले टर्म में 0.2 plus alpha को आप 0.2 alpha ले सकते हो and नीचे 0.1, so this will become 2 and your alpha का value directly comes out to be 0.85 into 10 raised to minus 5 which is 8.5। you see the alpha is of the 10 power minus 6, which is of course a very small value। So, but how did you know that you have to do 0.2 plus alpha in NH4 plus? because ammonium का concentration was present initially। so if there are species which are initially present at the start, then you have to consider them। Okay. यहाँ पर तो डेटा जो दिया है बस डेटा को मैंने पुट कर दिया। इनिशियली 0.1 ammonia and 0.2 ammonium both were present and then just follow the ice table का relation, find the kb and through the kb you just put the expression और फिर You अल्फा को इग्नोर करना है तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है। you won't make it 0.2 alpha instead of 0.2 plus. मीनिंग So you've written 0.2 plus alpha, right? Won't you make प्लस ही it? लेंगे ना, But won't you make it 0.2 alpha? इनटू अल्फा थोड़ी करोगे। ये 1 मोल है ना तो इसका अल्फा डिसोसिएट हुआ और यहाँ पर भी अल्फा आया। यहाँ 0 है होता है तो हम क्या करते हैं, ओनली अल्फा ले लेते हैं। अब अगर वो 0.2 है तो 0.2 के साथ अल्फा ऐड होगा, Okay. मल्टीप्लाई नहीं होगा। Okay. अब यहाँ पर एक्चुअली आपको पीएच फाइंड करना था, ये तो मैंने अल्फा भी फाइंड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करोगे, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज सिंपली योर अल्फा। देखो ना यहाँ पर OH minus is alpha, right? Yes, sir. So whatever is the alpha, that's your OH minus, which is 8.5 into 10 raised to minus 6. Now through that you can find out your pOH and from the pOH you can find out the pH। समझा गया? pOH will be equal to 6 minus log of 8.5। What will be 8.5 का log? Do you know log 8? 1.2. 0.9.
हाँ 0.9. 0.90. 0.9 एंड log 9 कितना होता है? 0.98. 0.96. एक्यूरेट वैल्यू आपको पता है क्योंकि log 3 का स्क्वायर होता है। अब 8.5 इन दोनों के बीच का वैल्यू ले लो विच इज 0.93, so this will become 5.07 and therefore pH will become 8.93, the answer. समझा? Yes. Yes. Next, determine the degree of ionization, meaning alpha, and the pH of a 0.05 molar ammonia solution. Ionization constant of ammonia can be taken from the table. So Kb value is given in the table that we have to just take from the data and calculate the ionization constant of conjugate acid of ammonia. Now initial जो part है, that is very simple. You have to pick up the Kb value from the table and through that you have to find alpha and the pH. तो जैसे हमने previous में किया exact same होगा, but now the ammonium concentration will not be 0.2, it will be taken as 0. तो अपना normal जो Kb equal to alpha square C upon 1 minus alpha का relation है, that is to be taken over here. समझा? तो Kb का वैल्यू जो है that is 1.77 into 10 raised to minus 5. Now through this value tell me will you take alpha or not take alpha? We will not take alpha. हाँ तो ये सीधा अल्फा स्क्वायर सी हो गया, तो अल्फा का वैल्यू सीधा रूट ऑफ के बी बाय सी से मिल जाएगा। Yes. और फिर ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एन इंटू अल्फा इंटू सी विच इज ऑल्सो इक्वल टू एन रूट ऑफ के बी इंटू KB. सी। एन 1 हो जाएगा, के बी पता है, सी पता है, ओ एच माइनस मिला, पीओ एच मिल जाएगा और पीओ एच से पीएच मिल जाएगा। फ्लो समझा? Yes. ठीक है। अब लास्ट में जो पार्ट बोला है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। व्हाट इज अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड? NH4 plus. NH4. So what is the relation of the ionization constant of So how ammonia? did you get the KB value? This is from the table. उन्होंने बोला है टेबल से लेना है, मैंने टेबल से लिया। अच्छा, okay. हाँ तो अब व्हाट इज द रिलेशन फॉर के एंड के बी? Ka into Kb is equal to KW. Kw, which is equal to 10 raised to minus 14. So for a base, its conjugate acid का ionization constant is Ka. So base का Kb आपको पता होता है, तो Ka, which is a conjugate acid का ionization constant, would be 10 raised to minus 14 upon Kb value. समझा? इसी रिलेशन से we also have pKa plus pKb equal to 14. जैसे pH plus pOH होता है ना 14, Yes. वैसे ही pKa plus pKb 14 होता है। तो आप अगर pKb के थ्रू भी pKa फाइंड करोगे और उससे Ka फाइंड करोगे तो भी वो मेथड चलेगा। It will give you the same answer. Clear? Yes, sir. Yes. Okay. The pKa of acetic acid and pKb of ammonium hydroxide are given respectively. Calculate the pH of ammonium acetate solution. Now this is the concept about finding the pH of a salt. तो जैसे यहाँ पर salt का pH फाइंड करना है तो think of salt का हाइड्रोलिसिस। hydrolysis. सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस का एक सिंपल समरी भी मैंने डिस्कस किया था, जस्ट डिस्कस दैट अगेन. So when you talk about the salts, you have various combination.
basically 4 combination. The salt could be strong acid, strong base ka salt, a strong acid, weak acid, strong base, and weak acid, weak base. Now, for the first case, strong acid and strong base ka salt, does it undergo any hydrolysis? No. 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 Because hydrolyze करने पर you will get strong acid and strong base which will dissociate completely only. मतलब उसका कोई lysis actually होगा नहीं. मतलब here we don't have any hydrolysis taking place. And that's why such solution will always have H plus concentration and the OH minus concentration equal, and standard condition में equal to 10 power minus 7. And that's the reason the pH will be equal to pOH for these solutions equal to 7, and the solution will be considered to be neutral. That's the entire summary for the first case. Example is sodium chloride. Understood. Yes. Strong acid, weak base. HCl plus NH4OH. The best example is ammonium chloride. तो अगर ये सॉल्ट का अगर कोई पीएच रिलेटेड क्वेश्चन आया तो ये जो एनालिसिस कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट होगा. So for a strong acid weak base ka hydrolysis, finally the H plus concentration will be greater or less. Greater. So strong acid will give you more H plus, तो greater होगा. मतलब इसका pH will be Less. less than 7. Solution will be Acid. acidic. And importantly, which ion of this salt is responsible for hydrolysis? Cation or the anion? Cation. Yes. So this type of hydrolysis is very, very importantly called cationic hydrolysis. और फिर इसका pH फाइंड करने का एक फॉर्मूला है जिसका मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक दिया था. Since it is less than 7, the formula 7 is minus. बस 7 minus minus. अब उसमें क्या आता है 7 minus Half pK. half pK A. A. अच्छा, अब pK A लेना है कि pK B लेना है उसका भी मैंने ट्रिक बताया था. weaker component. हाँ, बेस वीक है वेदिका. So pK P. Yes. B. ठीक है, तो पूरा ट्रिक के साथ बताया हुआ है. यू कांट मेक मिस्टेक्स ओवर हियर. उसके बाद हाफ लॉग ऑफ concentration of the salt to the base 10. समझा ये फॉर्मूला? बहुत इजी फॉर्मूला है, Yes. मगज मत करो, समझ के याद रखो. लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन आप आइस टेबल से नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम करके फाइंड आउट कर सकते हो. अब सेकेंड केस अगर समझा तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. एग्जाम्पल एसिटिक एसिड एंड NaOH. वन सेकंड. So for So weak OH acid minus and yes, in this case the H OH plus minus concentration will be less. OH आगे minus बोलो. pH will be greater than 7 Solution in will be, basic solution. and which ion In involved in the hydrolysis? ionic hydrolysis. An ionic hydrolysis, and the formula will be 7 plus plus, and plus में half of pK, weaker component acid है, और half log of C to the base 10. Now weak acid and weak base में
there are actually 3 cases. Because in case of weak acid, weak base, it can be relatively weaker than the other. Meaning either both are equally weak, or the acid is slightly stronger, or the base is slightly stronger than the acid. So in the first case, the solution is going to be neutral, same as strong acid, strong base वाला case. K greater than Kb में solution acidic हो जाएगा, pH less than 7, और Kb greater than Ka में basic हो जाएगा, pH greater than 7. Now, the formula for the pH calculation here is directly 7 plus half pKa minus pKb. Irrespective of Ka greater than Kb, the formula doesn't change. Remember this, important. It's 7 plus half of pKa minus pKb. Now, इसका 3 cases अगर analyze करो, तो K equal to Kb में pK, pKb equal होगा. In that case, pH will be equal to 7. तो यहाँ पे देखो pH equal to 7 का relation आ गया. अगर K बड़ा है Kb से तो pKa छोटा होगा. In that case, ये difference negative आ जाएगा, इसलिए pH less than 7 justified. और K अगर लेस है तो pKa बड़ा होगा, तो difference positive होगा, तो 7 से ज्यादा आएगा. Basically, pH greater than 7 justified. And one very important point to notice over here, the formula does not consist the concentration term. So this type of salts of weak acid and weak base, the hydrolysis here is independent of concentration. Very important. इसका एग्जाम्पल है अमोनियम एसिटेट, और बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन अमोनियम एसिटेट एक वेल नोन एग्जाम्पल. अब यहां पर कहीं बार डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जैसे अल्फा का क्वेश्चन आता है, वैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का भी क्वेश्चन आ सकता है. एंड शॉर्टकट में जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, उसका भी फाइंड करने का तरीका अल्फा के जैसा ही है. तो हियर द अल्फा इज एक्चुअली equal to root of Ka या Kb by C. So degree of hydrolysis is root of Kh by C. Where जो KH है hydrolysis constant, it's given by Kw upon the weaker component का ionization constant. जैसे अगर हम case 2 consider करते हैं, तो उसका hydrolysis constant would be given by Kw upon weak component में Kb. तो Kw by Kb, अब रूट ऑफ KH बाई C से आपको अल्फा मिल जाएगा. और केस 3 में एसिड वीक है, तो उसका KH वुड बी इक्वल टू KW बाय Ka. और केस 4 में स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों वीक है, तो उसका KH विल बी इक्वल टू KW बाय both K and Ka एंड Kb. एंड जो H है दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ जस्ट KH. C का टर्म नहीं आएगा. तो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वाला रिलेशन अगर याद है, तो आप ये वाला रिलेशन भी क्लियरली समझ सकते हो. सो दिस इज द एंटायर वन पेज समरी ऑफ हाइड्रोलिसिस का एंटायर पार्ट. समझा? Yes. So, but it's KW into C, no? No, it's just KW by KB. It's independent of concentration. Where? लास्ट में ना. For KH. हाँ, तो KH यहाँ पर C का टर्म आता है 2 and 3 के लिए, बट केस 4 में C का टर्म नहीं आता है बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन No, इज sir, not for case 4. For case 2 only. KH का value will be KW into C by KB. नहीं, इट्स जस्ट KW by KB. Okay, sir. तो अब यहाँ पर अमोनियम एसिटेट इज अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड वीक बेस. तो जैसे ही सॉल्ट का क्वेश्चन आया और पीएच फाइंड करना है, तो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ द केस 4, 7 प्लस हाफ ऑफ pKa
minus pKb. So it's 4.76 minus 4.75, which will be equal to 7 plus half. The difference is 0.01, and the half of that is 0.005. One more zero. समझा? Just greater than Yes, sir. 7. हाँ. Sir, can you explain the last वाला case again? वो weak acid and weak base. So if there is a weak acid and weak base, ये 3 cases बोल रही है. Yeah. So for the weak acid and weak base, it can be relatively weaker than the other. So there could be 3 cases depending on their dissociation constants. Either the Ka and Kb are equal, meaning they are equally weak. In that case, the pK and pKb are also equal. Subtract करोगे 0 हो जाएगा and pH will be equal to 7, justifying that the solution is neutral. K ग्रेटर देन Kb हुआ तो एसिड स्ट्रॉन्गर है बेस से, यानी सोल्यूशन एसिडिक होगा और pH लेस देन 7 आना चाहिए. फॉर्मूला से देखोगे K बड़ा है तो pKa will be lesser. So in that case, the pKa minus pKb will be negative, and that's why solution will have pH less than 7. Vice versa, K छोटा है Kb से तो pKa बड़ा होगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, 7 से प्लस होगा, सोल्यूशन बेसिक और pH ग्रेटर देन 7. अब जो क्वेश्चन था उसमें अमोनियम एसिटेट है, which is weak acid and weak base का रिलेशन. The formula is 7 plus half of pKa and pKb, the values which are given. तो उसका डिफरेंस जो है 0.01 आया एंड हाफ 0.005 आया, एक्स्ट्रा 0 है 0.005. तो 7 प्लस हाफ करोगे, दिस इज व्हाट इज द आंसर. समझा? Yeah. ओके. फिर लास्ट में वी हैव द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन. सो यू आर आस्क्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3 in pure water assuming neither kind of ion reacts with water. So solubility product of A2X3 is given. अब इसका एक्चुअली डायरेक्ट रिलेशंस है जो, इफ यू रिमेंबर, it's easy to solve the question. So the salt could be of the type AXBY. In that case, the KSP is given by, what was the final relation? X raised to X X into A Y to raised to Y, is S raised to X plus 1. बस. So ये अगर आपको पता है तो KSP और solubility का जो रिलेशन है वो कोई भी सॉल्ट के लिए फाइंड कर सकते हो. फॉर A2B3 salt, the KSP will be equal to 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, S raised to 2 plus 3, which is equal to 4 times 27 into S raised to 5. मल्टीप्लाई करोगे तो 108 S raised to 5 आ जाएगा. और solubility अगर फाइंड आउट करना है, then the solubility will be equal to KSP upon 108, the whole raised to fifth root, 1 by 5. अब सॉल्व करने के लिए ना 1.1 into 10 raised to minus 23 upon 108, the whole raised to 1/5. अब फिफ्थ रूट जो फाइंड करना है उसके लिए दिस 10 का पावर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5. तो आपको क्या करना है, उसको 5 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है. I can say 10 raised to 2 into 10 raised to minus 25 over here and divide by 108. This is an important step. 10 का जो भी पावर है वो उस रूट का मल्टीपल होना चाहिए. ठीक है. So what we have now is 110 divided by 108. Now 110 upon 108 is approximately 1, and 10 raised to minus 25 का fifth root is just 10 raised to minus 5. आगे आंसर, solubility is 10 raised to minus 5 molar. खत्म. Understood?
Yes. एक मिनट। हाँ, अब यहाँ पर दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द molar solubility. We have to calculate the molar solubility of NiOH twice in 0.1 molar NaOH. The ionic product of NiOH twice is 2 into 10 raised to minus 15. Now, in this particular question, there is NiOH twice, जिसका solubility is to be found, मतलब that's the sparingly soluble salt in consideration, and it's present with the NaOH. Now, the effect over here to be used is Common ion ion. effect. Yes. NiOH twice, when dissolved in water, would give you Ni2 plus and 2OH minus. ठीक है, so being a sparingly soluble salt, अगर इसका solubility S है, then the OH minus solubility will be 2S. Now in normal scenario, when there is no other electrolyte in which there is nickel plus or OH minus common, then no problem, you proceed as per your normal flow. But solution में इसके साथ there is 0.1 molar NaOH present. It means that there is 0.1 molar Na plus and 0.1 molar OH minus. So there is 0.1 molar OH minus in addition, which is of course going to be much greater than the OH minus concentration coming from a sparingly soluble salt. So the actual OH minus concentration is not 2S, it will be 2S plus coming from NaOH 0.1. नहीं भाई ये 9 to 16 25 ना Sorry, Arjo? नथिंग अर्जव क्या बोल रहे हैं? सर नथिंग नथिंग ठीक है, अब ये सल्यूबिलिटी के जो वैल्यूज है, अगर आप देखो तो KSP का वैल्यू इज 10 पावर माइनस 15. माइनस 15 पावर मतलब द S का वैल्यू इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल. In that scenario, the 0.1 concentration coming from NaOH is much greater than the 2S. So, ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए एक सिंपल ट्रिक मैंने ये दिया है. S plus anything, you just ignore the S वाला term, मतलब this you take approximately as directly 0.1. समझा? Now the KSP is equal to Ni plus 2 into OH minus का whole square. KSP is the ionic product. Now, ionic product is actually the IP which is not at equilibrium condition. अब उन्होंने इसके अलावा तो कोई और डेटा नहीं दिया है, मतलब this basically ionic product is equal to KSP, meaning the condition of equilibrium is directly to be assumed. So on that assumption, I'll take 2 into 10 raised to minus 15 over here. The nickel concentration as Ni plus 2 and the OH minus concentration as 0.1 का square. तो इन दैट केस जो निकल का कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल रहा है वही तो आपका मोलार सल्यूबिलिटी है. कैन यू सी दिस? एंड दिस आंसर विल बी 2 into 10 raised to minus 13 molar. दैट्स इट. कॉमन आयन इफेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है. So why did we neglect the 2S? Because if KSP, if you see, it is 10 power minus 15. It's a very, very small value. KSP क्या होता है? The solubility product. अच्छा मतलब इससे आने वाला जो solubility है, that is also going to be very, very small. हाँ And if it is very, very small, then अगर आप देखोगे तो वैल्यू 10 पावर माइनस 13 है. इसके सामने 0.1 वैल्यू तो बहुत बड़ा है. ओके हाँ ओके तो दैट्स व्हाई जनरली कोई भी क्वेश्चन में जो एस का टर्म है वो आप हमेशा इग्नोर करोगे whenever there is any common ion from a strong electrolyte. ओके This is a very very standard method for any common ion effect.
So conclusion over here, common ion effect is decreasing the solubility. Reason, because of the common ion, the concentration of the OH minus increases and it will try to combine with the Ni2 plus and shift the equilibrium to the backward direction as per LCP. And जितना NiOH twice undissociated और undissolved रहेगा उतना उसका solubility कम हो जाएगा. So a common ion effect in the solubility equilibrium always decreases the solubility. फिर इसका आईपी का रिलेशन है जहां पर अगर आईपी और केएसपी इक्वल हो जाते हैं then it's a condition of equilibrium. But if IP is greater than KSP, so IP is a non-equilibrium condition. It will try to go to the equilibrium condition. In that case, the IP has to decrease and the reaction has to shift to the backward direction. So how do we know the IP is equal to KSP? In this case, nothing is given. So मैंने क्या बोला? We will assume that this is the condition of equilibrium only. क्योंकि और कोई डेटा नहीं दिया है. और अगर दो डेटा दिया है तो आईपी और केएसपी को कंपेयर करना है. तो आईपी लेस देन केएसपी के केस में क्या होगा? आईपी बढ़ाकर इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा. जब बैकवर्ड में शिफ्ट होता है मतलब देयर इज मोर अमाउंट ऑफ अनडिजॉल्व सॉल्ट and that will try to get to precipitate. That is why this we call is the condition of precipitation. प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा उसके लिए आईपी और केएसपी कंपेयर करो. आईपी अगर बड़ा है तो फिर प्रेसिपिटेट होगा. हाँ बोलो. Sir, can you please explain the common ion effect again? For a sparingly soluble salt, if there is any ion which is common to the cation or anion, then the common ion effect will be applicable. So, in this question, there is nickel hydroxide which is dissolved along with NaOH. Do you see any common ion here? Yes, OH. Yes. तो इसमें आप कॉमन आयन इफेक्ट लगाओगे. सिंपल. अब यहाँ पर NaOH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वही आपका OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन होगा बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. पूरा डिसोसिएट करेगा. तो थ्रू द आइस टेबल निकल कॉन्सेंट्रेशन इज S. OH minus concentration is 2S. But this 2S is only of the sparingly soluble salt. There will be additional 0.1 OH minus coming from NaOH. So I added 2S plus 0.1. अब जनरली ये जो S की वैल्यू है बहुत ही छोटी होती है इसीलिए 2S के सामने जो भी वैल्यू होगा कॉमन आयन का हमेशा 2S will be ignored and it will be approximated to that particular value of the common ion. And then you just apply the equilibrium of KSP and get the solubility का for value. Alright, thank you. So, if हाँ. IP and KSP are not at equilibrium and different values are given, so then how would you find? IP and KSP both are not given. So, if they are not at equilibrium and the different values are given, तो उसमें KSP का डेटा आपको दिया होगा. IP आपको ढूंढना होगा. कई बार ऐसे बोलते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार Ag प्लस is mixed with 0.1 molar of Cl minus. है ना? okay. अब KSP of AgCl मान लो 10⁻⁻5 है. मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूँ. अब क्या करोगे? ये जो वैल्यू है when the equal volumes of Ag plus and Cl minus are mixed, it will form the AgCl, which is a sparingly soluble salt. What you will do is Ag plus at any time t will be calculated as. Now equal volume जब भी होता है तो what happens to the concentration? What we do is moles upon volume. So 0.1 into V is molarity into volume. Upon the total volume after mixing will become 2V.
वी कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी इक्वल वॉल्यूम मिक्स होता है कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाता है। तो ये डायरेक्ट आप 0.05 ले सकते हो, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट द टाइम t। अब जो आपका IP होगा दैट विल बी इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस, विच विल बी इक्वल टू 5 into 5 into 10⁻⁴, 0.05 का स्क्वायर ना, Yes. so which will be 25 times 10⁻⁴, या 2.5 times 10⁻�3। अब ये वैल्यू को कंपेयर करो KSP के साथ, व्हाट इज द रिलेशन? So if it is unsaturated, अरे बाबा, इफ बट का क्या रिलेशन? KSP और IP का वैल्यू चेक कर खाली, क्या पता okay, चला? लेस है कि ग्रेटर है? it is greater. बस, तो IP is प्रेसिपिटेशन greater. होगा, Yes. प्रेसिपिटेशन होगा, खत्म, इतना ही है। अब So प्रेसिपिटेशन then हो रहा है तो नाउ यू कैन कंक्लूड that this is a unsaturated, saturated or super saturated solution. super saturated. Yes. So then in that you won't be asked molar solubility, right? नहीं, इसमें सिर्फ प्रेसिपिटेशन। अब मोलर सॉल्युबिलिटी भी पूछा तो ये तो सिंपल है ना, KSP इक्वल टू H स्क्वायर होता है Okay. और AB Got, टाइप ऑफ सॉल्ट, वो भी got फाइंड it. कर सकते हो। मतलब इसमें Okay. 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। KSP दिया है, S ढूंढो, S दिया है, KSP ढूंढो, और कॉमन आयन अगर रहेगा तो हाउ डज इट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, एंड देन कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिलेटेड क्वेश्चन। 3 या 4 वैरायटी के ही क्वेश्चंस हैं और कुछ है ही नहीं इसमें। Okay. ठीक है, चलो और कुछ अपार्ट फ्रॉम दिस? So buffer. ओके, see, buffer is that solution which resists the changes in the pH when small amount of acid or base is added. So basically buffer बनाने के लिए let's say दो टाइप के buffers होते हैं, acidic and basic buffer. I'll talk about acidic buffer. So acidic buffer is formed by mixing weak acid and salt of a strong base. Weak acid का salt of a strong base. Meaning if you have any weak acid like acetic acid and there is a salt with a strong base like NaOH, that is sodium acetate, then such type of mixture of acetic acid and sodium acetate will form a buffer solution. अब बफर का फंडामेंटल मैकेनिज्म क्या था वो भी बता देता हूँ। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, so it will dissociate partially into acetate and H+. But acetate is a salt, so it will dissociate completely into acetate and Na+. So now solution में there is undissociated acetic acid, dissociated acetate H+, and dissociated acetate and Na+. Because this is going to completely dissociate. तो 5 species रहेंगे. Now 2 and 4 वाले species में what do you observe? कॉमन आयन हो गया। तो ये कॉमन आयन क्या करेगा, ये इक्विलिब्रियम को पीछे शिफ्ट कर देगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट द एसिड विच वाज ऑलरेडी वीकली डिसोसिएटेड उसका डिसोसिएशन और कम कर देगा। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोला था मैंने, मरे हुए को और मार देता है, दैट्स कॉमन आयन इफेक्ट। ऑलरेडी एसिड वीक था, कॉमन आयन ने उसको और वीक कर दिया। कॉमन आयन इफेक्ट मेक्स द वीक बिकम इवन वीकर, मरे हुए को और मार देता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो ना एसिडिक बफर काम कैसे करता है? If there is external addition of an acid, let's say H+, then this H+ will be absorbed by the acetate to form the undissociated acetic acid, which is already becoming weak due to common ion effect. तो वापस वो H+ रिलीज नहीं करेगा। तो H+ आया, एसिटेट ने खाया और H+ चेंज होने नहीं दिया, तो pH रेजिस्ट हो गया।
Similarly, OH minus आया, अब OH minus will be accepted और consumed by acetic acid. जैसे ही वो एसिडिक एसिड खा लेगा तो एसिटेट और H2O बनेगा। अब एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है, मतलब OH माइनस पूरा का पूरा एसिडेट खा गया, इसका मतलब उसका pH रेजिस्ट हो गया। दिस इज हाउ द एसिडिक बफर वर्क्स। खत्म। So can't OH minus react with Na plus? तो फिर ऑफ बेस कोर्स, फॉर्म। तो NaOH बनेगा। अब NaOH वापस टूट जाएगा पूरा, Na प्लस और OH माइनस दे देगा, तो pH ओके। चेंज होगा कि नहीं होगा? नो। तो थियोरेटिकली आपका डाउट बराबर है, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज होगा ही नहीं। Na प्लस का सोल्यूशन में होना ना होना डजेंट मैटर, बिकॉज इट्स एन आयन कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और याद रखना, मैं एक सिंपल स्टेटमेंट बोलता हूँ कि इक्विलिब्रियम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज रिलेटेड टू द वीक कंपोनेंट्स लाइक वीक एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स इक्विलिब्रियम के लिए कोई इफेक्ट नहीं या कोई रोल प्ले नहीं करते। दैट्स अ सिंपल लॉजिक टू रिमेम्बर। गॉट इट? आफ्टर दिस बफर का मैकेनिज्म, इसका पीएच का एक फॉर्मूला है, हेजलबैच एंड हैंडरसन इक्वेशन बोलते हैं, which is pKa plus log to the base 10 the concentration of the salt by the acid. And salt basically acid का ही conjugate base होता है, तो आप salt लिखो या conjugate base लिखो upon acid. And this concentration का ratio is actually moles upon volume of the salt, moles upon volume of the acid. वॉल्यूम तो पूरे सोल्यूशन का सेम ही रहता है, इसलिए हम बोलते हैं कि बफर सोल्यूशन वॉल्यूम या डाइल्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। द पीएच ऑफ अ बफर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम और द डाइल्यूशन। समझा? और लास्टली, सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम हो जाता है तो ये लॉग रेशियो 1 हो जाएगा, log 1, और log 1 0 हो जाता है, मतलब इन दैट केस pH becomes equal to pK when the concentration of the salt becomes equal to acid. This is called as the condition of the best buffer. So these are the variety of questions from the buffer. बोलो कोई डाउट? So can you explain OH minus and CH3CO when it attacks? Whether it? So when OH minus attacks हाँ, the acetate ion. so OH minus एक तो केस है कि NaOH के साथ कंज्यूम हो जाए, या फिर दूसरा Na प्लस के साथ, तो मैंने बोला कि कोई मतलब ही नहीं बनता है, बिकॉज OH माइनस वापस उतना का उतना आ जाएगा, तो pH अफेक्ट हो सकता है उससे, which we don't want. So actually OH minus is consumed by the acetic acid, and this will actually give you acetate ion and water. वाटर ऑलरेडी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वापस डिसोसिएट करके OH माइनस देने की कोशिश नहीं करेगा। और सोल्यूशन में एसिटेट तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, ठीक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ भी गया तो जो सोल्यूशन का जो पीएच है वो अफेक्ट नहीं होगा। एंड दैट इज हाउ द पीएच इज मेंटेन्ड बाय दिस टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन। समझा? Yes, sir. चलो, और कोई डाउट? Sir, can you show that type of question where we have to find the pH of the resultant mixture and two pH are given and the two solutions are mixed and we have to find the resultant mixture का pH. देखो, उसमें 3 केसेस है मिक्सिंग ऑफ। पहला, 2 एसिड्स का मिक्सिंग हो सकता है, 2 बेसिस का मिक्सिंग हो सकता है, या फिर एसिड एंड बेस का मिक्सिंग हो सकता है। If there are 2 acids which are being mixed, मतलब there is HCl and HNO3, both strong acids का मिक्सिंग है, तो रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है M3 could be written as M3V3 equal to M1V1 plus M2V2.
अब दोनों एसिड्स अगर मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक मतलब उनकी बेसिसिटी का सेम है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बट मान लो यू आर बीइंग गिवन द मिक्सिंग ऑफ HCl plus H2SO4 मतलब one is a monobasic acid and other is a dibasic acid. In that case you don't go with this formula, what you change is molarity की जगह normality. So N3P3 is equal to N1V1 plus N2V2. तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलैरिटी टाइम्स वॉल्यूम। तो इस केस में अगर HCl है तो 1 इंटू M1V1 लेंगे, बट H2SO4 है तो 2 इंटू, बिकॉज डाइबेसिक एसिड है, मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो भी वैल्यूज दिया रहेगा वो, और जो नेट कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी गिवन बाय N3 एंड नेट वॉल्यूम जो V3 है दैट इज ऑफ कोर्स द एडिशन ऑफ V1 एंड V2। तो ये हो जाता है आपका फॉर्मूला फॉर द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन रिजल्टेंट व्हेन टू एसिड्स आर मिक्स्ड। सेम लाइंस पे टू बेसिस का भी सेम रिलेशन होगा, खाली H प्लस की जगह OH माइनस आ जाएगा विद द सिमिलर फॉर्मूला। समझा आसिम ये दोनों केस? यस सर। अब उसमें जब pH दिया होगा तो pH से H प्लस तो ढूंढ सकते हैं ना, हाँ सर। और वही H प्लस आप M1 में सब्सटीट्यूट करोगे। ठीक है, अब एसिड और बेस का मिक्सिंग अगर कंसिडर करते हैं, इसमें क्या होता है कि यू कैलकुलेट द NaVA फॉर द एसिड एंड NbVb फॉर द बेस। अब इसमें तीन केसेस आएगा, NaVA NbVb से इक्वल है यानी इक्विवेलेंट्स इक्वल, NaVA ग्रेटर है NbVb से, और NaVA लेस है NbVb से। ठीक है, तो अगर NaVA और NbVb इक्वल है मतलब एसिड में H प्लस और OH माइनस इक्वल है, सोल्यूशन न्यूट्रल है, pH इक्वल टू 7 है। ये डायरेक्ट हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस में NaVA ग्रेटर मतलब सोल्यूशन एसिडिक है। In that case, you take the difference of NaVA and NbVb divided upon the total volume of Va and Vb. और थर्ड केस में NbVb अगर ज्यादा है तो OH माइनस ढूंढोगे बाय NbVb माइनस NaVA अपॉन द टोटल वॉल्यूम Va प्लस Vb। तो H प्लस ढूंढने के बाद यहाँ पर pH ढूंढ सकते हो और OH माइनस से POH ढूंढकर फिर pH ढूंढ सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन। अब दयाली क्या टाइम पास कर रहे थे? समझा? यस सर। Okay, any doubts? सर सैटरडे को सर आपका लेक्चर टेस्ट के बाद रख सकते हो क्या सर? नहीं अभी सर टाइम टेबल में भी ट्राई टू एडजस्ट बट नहीं हो रहा है, मैनेज करो एक वीक। कल डाउट सॉल्विंग देखना था, दिस इज द रीजन द लेक्चर गॉट शिफ्टेड। तो सर कल वो एमसीक्यूज का डाउट सॉल्विंग है क्या सर? हाँ कल इसीलिए तो मैंने कैंसिल किया ना, बिकॉज माय लेक्चर वाज गेटिंग एंडेड एट अबाउट 7। ओके I सर। would not have been able to take the doubts. That's the reason I cancelled the lecture. ठीक है, so now you can solve your master the NCERT and PYQs, and tomorrow evening I'll take the doubts of NCERT and the PYQs. ठीक है, चलो बाय, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.